how to check each and every item during the course of our audit. First, we will start with the verification of advance with special reference to income recognition and assets classification. I hope मैंने advances के बारे में आप लोगों को clear किया कि advances are those assets which are borrower accounts, which is loan accounts. मनी लेंडिंग के बिजनेस में कंपनी ने जितने भी लोन्स एसेट्स हैं, लोन्स दिए हैं, दे आर कॉल्ड fund based accounts, they are called as advance. And how they have to classify and how income will be recognized, it has to be considered under IRAC norm. So what IRAC norm says, first we will check. In bank there are certain types of advances. Depending on the type of facility, we classify it as a standard or substandards. Standard are those assets which are continuously showing good, and bank are continuing earning from those assets, and some assets which are not giving any interest or for a certain period of time are to be classified as a NPA, meaning substandards. सो हमें दो तरह से क्लासिफिकेशन करना है एडवांसेस को, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड्स में. स्टैंडर्ड्स जो हमें जिससे हम पैसा अर्न कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड्स जिससे हमारी इनकम आनी बंद हो गई है. अब उसको क्लासिफिकेशन के लिए हमने पहला फैसिलिटी वाइज डिवाइड किया. पहला बात करते हैं टर्म लोन की. इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज. यहाँ पर बात करते हैं कि अगर किसी टर्म लोन की कोई इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू होता है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. परफॉर्मिंग एसेट्स दोज एसेट्स व्हिच आर गिविंग अर्निंग्स, and non-performing assets which are not giving earnings. So it will be classified after 90 days when when overdue for a period of 90 days. Working capital financing, overdraft and cash credits if account remain out of order for more than 90 days. अगर हमारा account कोई working capital limits हैं, working capital limits कौन सी हुई जहां पर बैंक स्टॉक डेटर्स और इन बुक डेट्स के बेसिस पर जो कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओडी और सीसी जिसे बोलते हैं, वो असाइन करते हैं. अगर उनको एनपीए करना है, देन इट शुड बी रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर? Out of order means should be if the outstanding balance remain continuously in excess of the sanction limit DP/DP. अगर कोई अकाउंट की लिमिट थी 1 करोड़ रुपी और वो कंटिन्यूसली 1 करोड़ से ऊपर है आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, देन इट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर, एंड 90 डेज के बाद इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स की. द बिल्स रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज और डिस्काउंटेड. जितने भी प्रकार के बिल जो बैंक इश्यू करता है, इन लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बिल्स परचेज, बैंक गारंटी, अगर कोई भी जो परचेज की है बैंक ने या डिस्काउंट करी है और जिसका फंड बेस्ड एक्सपोजर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहता है, then it will be treated as NPA after 90 days. Now, next type of facility, agriculture advances. Agriculture advances, they have divided two types of agriculture advances because some crops having short duration and some crops having long duration crops. So they are divided into short duration crops and long. शॉर्ट के लिए उन्होंने कहा कि 2 क्रॉप सीजन तक अगर इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल नहीं मिलता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए. एंड जहां पर लॉन्ग टर्म की बात है, तो लॉन्ग टर्म जहां पर पीरियड मोर देन 1 ईयर है, देन इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ
principal और interest thereon remain overdue for a one crop season. अगर एक crop season तक overdue रहता है, then it will be treated as NPA. Liquidity facilities. The amount of liquidity facility remain outstanding for more than 90 days. किसी भी प्रकार का लिक्विडिटी अगर कोई आपने ऑफर करी है बैंक ने, कोई whatever name called, और 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहती है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए. एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जहां पर रिसीवेबल रिप्रेजेंटेटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर अनपेड रहते हैं 90 डेज से ज्यादा, उन पर भी 90 डेज का क्राइटेरिया फॉलो होगा. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर कोई एसेट हमारी जो वेरियस फैसिलिटी टाइप मैंने डिस्कस किए उनके अकॉर्डिंग अगर हमारी 90 डेज से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग है, जो अर्निंग नहीं दे रही है, देन इट विल हैव अ चांस टू बी क्लासिफाइड एज ए एनपीए. और यहाँ पर हमारे लिए स्पेशल फोकस की रिक्वायरमेंट है कि हमें जब भी कोई एडवांस कोई एनपीए होता है उसको बेसिक फंडा आईआरएसी के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट करना है. देन आफ्टर अगर ये हमें एनपीए हो रहा है देन हमें उसे शो कर भी आना है. ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल बैंक मैनेजर कहते हैं कि हम उसमें कैश जमा करा देते हैं, या कोई और कि पार्टली अमाउंट रिसीव हो गया उसमें, या किसी भी और तरह की अगर ऐसी कोई कंडीशंस भी हमारे सामने आती है, देन ऑल्सो it will not make any impact on the classification of these advances. So based on the classifications, we have to classify our assets into standards or substandards. और standard substandards के according जहाँ पर हमें provisioning की भी requirements होती है, तो अगर हम कोई assets substandards में चली जाती है, then substandards assets will be classified as NPA. यहाँ पर further हम बात करें तो there are two categories, substandards और doubtful. Substandards में next 1 year तक which has remained NPA for a period of less than or equal to 12 months, then it will be treated as substandards. Or if after more than 12 months, it will be classified as a doubtful assets, जहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, एक साल तक D1, 2 साल अगले 2 साल तक D2, doubtful 2 category, and next 3 to 5 years it will be classified as D3 category, and thereafter it will be classified as a loss assets. So 100% provisioning will be required. So provisioning will be depend on the basis of the asset classification, NPA category, and thereafter it will be also have the impact of the security which is having. Suppose किसी advance में security कम है तो जितना अनकवर्ड है एरिया उस पर प्रोविजनिंग ज्यादा होगी, जितना पोर्शन पे सिक्योरिटी कवर है उस पर प्रोविजनिंग कम होगी. सो हमें उस बेसिस पर अपना प्रोविजनिंग भी चेक करनी है. Optotax, India's #1 GST platform, all because of your love and support, and it is exclusively free for tax professionals. So please, I would request everybody to use Optotax in their offices to reconcile ITC, to download all the beautiful reports we have. And it is trusted by 50,000 plus tax professionals now, and who are serving their 1 million plus clients, right? So please make sure that all of you use Optotax in your offices. It will help you a lot. And what are the benefits? How does Optotax help tax professional in making GST compliance simple? Sir, automatic reconciliation of ITC, auto fetching of data from 1st July 2017. So if you start using Optotax from today, then also you will be getting the data from 1st July 2017. This is the beauty of Optotax. Third, if you are using any other software, no problem, sir. You can simultaneously also use Optotax. In just 2 minutes, Optotax fetches all data from the government portal. We have got all the due respective approvals from the government, and all the data is fetched in your system for all your clients. You have 500 clients, 200 clients, single dashboard you will be able to see, right? This is the beauty. I think many of my tax professionals, the tax professionals present in the webinar using Optotax, everybody is saying it is very nice. Thank you so much for your love and support, sir. The full facility, opt-in, opt-out facility, IFF, everything is there in Optotax now. What are the differentiators? Live dashboard, multiple users, no installation required, automatic purchase reconciliation with 2A. What's more, you can view cash and credit ledger, download month-wise 2B, GST challan creation, download. Yes, the best part, I'm making an announcement here.
We are making the challan payment also automatic now. It will be integrated to your net banking, whatever net banking you are using, and challan payment also you can do now from Optotax. Very soon we are bringing this feature. It took a lot of time for us to take all the approvals from the banks, but yes, we are bringing that features. Just skipping this all the basic slide, because already many people are using, but still if you're not using, please do sign up. And support, we focus a lot on support. This is the phone number. If you want to note down, just call this number and he will guide you how to use Optotax. And sign up you can do yourself. It's just a 1-minute task, but please note down this number. You can call on this number. info@optotax.com is our email ID. YouTube pe we have demo videos. You can see the demo videos and then you can use Optotax. But I would suggest everybody to please start using Optotax. This is the software link: https://gst.optotax.com. Google Chrome browser. It works in desktop or laptop, right? So amazing facility we have given to you. So even from the technical aspect, we are trying to help you. So please utilize this benefit. Ashish ji, sir, rest all the software companies will run from the market as your Optotax. Ashish ji, our motive is not to make anybody run. Our motive is to serve the tax professional community, to help the tax professional community, make a GST platform, bring all of them together, scratch their brains, learn whatever the provisions are coming up, and work also. Let's make simple. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss important GST updates.